सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भवानी। समस्त को आम चैनल साइंस स्टडी क्लासेस को स्वागत। तो आज तुम मान को पई छ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक जनरल अवेयरनेस रो वेरी इंपोर्टेंट सेगमेंट और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम मान को पई नहीं कि आसे এবং सेतरे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करिवा। निश्चित मात्रा तुम मान को क्लास भी भल लागुची। जणे के मैसेज करथले सर इंपोर्टेंट डेट्स रो गोटे सेशन नहीं कि आसंतु। निश्चित मात्रा रे छुआ नेक्स्ट क्लास रे तुम मान को पई इंपोर्टेंट डेट्स रो सेशन नहीं कि आसीबा निश्चित पूरा गारंटी सहकार। ओके, जहाँ जहाँ सब इंपोर्टेंट डेट्स एंड सेगमेंट्स रहउची ता ऊपर निश्चित मात्रा रे आनिबा। कौन कौन सब इंपोर्टेंट डेट तुम एग्जाम पर्सपेक्टिव रे इंपोर्टेंट रहउची रहिला कथा। आउ जने माने स्टूडेंट करो सब बेले बहुत कथा रे क्वेरीज रहउची। मु तुमको छुआ केथर कहलिनी जे तुमर छुआ किछि कोन तुमना सतपथी जाओ 7894072404 नंबर रे कांटेक्ट करो। ओके, रहिला कथा छुआ मु जो सब पढौची जहाँ भी किछि सेटा कोनोसी प्रकार हला फालतू तो माने विषय नुह बा फालतू क्वेश्चंस गुडिका नुह। काहे कि ना एवरी क्वेश्चन एंड एवरी नॉलेज इज इंपोर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट और एवरी एग्जाम। ठीक अछि, रहिला कथा बीएड रे जदी तुमर सेटा पढो नाही ताले तुमे ताकू स्किप करो, तुमे न पढी पारो, इट्स योर मैटर। बट तावली नुह जे मु ताकू पढेइबिनी एज ए टीचर। मो ए वीडियोटा बीएड पिला नुह शायद ही अन्य पिला माने जो माने एग्जाम प्रिपरेशन करचंदी सेमान को पई बेनिफिशियल हेई पारे। निश्चित मात्रा हो भी थिवो काहे ना जे धर जो जीके पई प्रिपरेशन करूची से तो निश्चित मात्रा रे वीडियोटा देखिवो। इफ जदी तुमको छुआ हिस्ट्री रे जदी एनी प्रॉब्लम्स एनी डाउट्स आछी बा जदी तुमको भल ही लागु नाही काहे कि क्लास रे रहउची ताले तुमे छुआ से पार्ट स्किप करि परिवो। इट्स योर ऑप्शन एंड यू हैव टू। बट मो पाखरे एज ए टीचर मु मोर स्टूडेंट मान को एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट मु निश्चित मात्रा रे क्लियर करी। तो एटा हला मो दायित्व। रहला कथा जदी तुम दायित्व जहां भी किछि अछि ताको स्किप करिवार हला तुम दायित्व कि कोन करिवो सेटा तुमे निश्चित मात्रा रे करि परिवो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो आपरे मु आ तुमको एते भी कन्क्लूजन करिया पे चाहेन एंड तो आपरे डिस्कशन भी करिया पे चाहून। ठीक अछि, तो बस तुमको जदी छुआ जो पार्टटा निश्चित मात्रा रे भल लागुची ताको तुमे देखो। आ जो पार्टटा जदी तुमको छुआ भल लागु नाही किंबा तुमको अनएथिकल और अन माने इलॉजिकल लागुची ताहले तुमे निश्चित मात्रा रे ताको स्किप करि परिवो। ओके, एवं as a teacher and my duty that I will provide every knowledge and every aspect to my students. Okay, so thank you for your comment. और जहाँ भी किसी प्रॉब्लम्स अछि निश्चित मात्रा रे कमेंट रे जणेबो। मु निश्चित मात्रा रे एमती तुम मन को जहाँ भी रिप्लाई थी निश्चित मात्रा रे देबी। रहला कथा एंड पर्सनली जहाँ भी किछि बुझिबार अछि ताले ए नंबर रे मथे कांटेक्ट करि परिबे एनी प्रॉब्लम्स। ओके, और जहाँ को जदी हम क्लास हम इनिशिएटिव टिके भी भल लागु ताले निश्चित मात्रा रे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करनियंतु एवं पाखरे थिबा बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करनियंतु। हमको मोटिवेशन मिलियो हमें और नुआ नुआ वीडियोस अपन मान पई आनी परिबो। केवल गोटे सेगमेंट में जे हमें हम ए जो चैनल हमर ए जो वीडियोस केवल गोटे सेगमेंट बीएड रे रहि जिवो ताबली नुए हमें विभिन्न सेगमेंट रेलवेज पाखर आरंभ करी ओएसएससी ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी जे कोनोस भी एग्जामिनेशंस पई निश्चित मात्रा रे आनिबा क्लासेस आगु को। ठीक अछि, तो बस आज प्रथम क्वेश्चन देखो। द अटल टिंकरिंग लैब is of the government of India aim to fostering innovation of university level, college level, school level and cooperative level. The Atal Tinkering Labs. कोटा छुआ या राइट आंसर हबो स्कूल लेवल। ओके, जो अटल लैब्स गुडिको is of the government of India एटा होची एम करा होची for fostering the innovation of the school level. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The Ishwar Bhai Patel Committee, the Ishwar Bhai Patel Committee, 1977, which was appointed to review the NCERT's document on the 10-year school curriculum, presented which of the following concept? Community-oriented learning, syllabus flexibility, social useful productive work, and central board-based curriculum. ठीक अछि, तो क्वेश्चन आउथरे छुआ पढि दउची। The Ishwar Bhai Patel Committee 1977 which was appointed to review the NCERT's document on the 10-year school curriculum presented which of the following concept? Community oriented learning, syllabus flexibility, social useful productive work
सेंट्रल बोर्ड बायस्ड करिकुलम व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर कोनटा छुआ यार ठीक उत्तर हेबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एडवाइजरी बॉडी आउ थरे भलो भाबरे क्वेश्चन पड़छि निश्चित मात्रा रे सुनि नियो टिके भलो भाबरे आंसर देवा पूर्व which of the following option is an advisory body that has been entrusted with the responsibilities of prescribing standards and curricula for the craftsman training advising the government on the overall policy and programs conducting all India trade tests and awarding national trade certificates से कहूची जे छुआ एथि मध्यरु कोउ एडवाइजरी बॉडी छुआ क्राफ्टमैन ट्रेनिंग एडवाइजिंग ऑन गवर्नमेंट ऑल ओवर पॉलिसी पई से माने हला कोन करथांती ना टेस्ट करथांती एवं अवार्ड और सर्टिफिकेट दिथांती इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आईसीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी and council for indian school certificate examination cisc which one is the correct answer कोनटा एथि मध्यरु छुआ ठीक उत्तर हेबो एटा एनसीवीटी इजीली झरा पड़ी होची आंसर टा ठीक अछि यूजीसी हैज इंट्रोड्यूस्ड स्वामी विवेकानंद फेलोशिप यूजीसी कौन इंट्रोड्यूस करछि छुआ स्वामी विवेकानंद फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड for research in social science with the aim of with an aim of to compensate direct cost of higher education for women scholars who happen to be from tribal families and girls who are physical handicapped women scholars whose parents are ex-servicemen girls who happen to be the only girl child in their family which one is the correct answer option D is the right answer girl at a girl is girls who happen to be the only girl child in their family okay next question देखो in 1928 to 29 which among the following committee was set up as an auxiliary committee to Simon Commission to inquiry into the existing system of education in India Surgeon Committee Zakir Hussain Committee Abbott Wood Committee and Hartog Committee. Which one is the correct answer? In 1928-29, which among the following committee was set up as an auxiliary committee to Simon Commission to inquiry into the existing system of education in India? Surgeon Committee, Zakir Hussain Committee, Abbott Wood Committee and Hartog Committee. Answer लेला छुआ क्या ना Hartog Committee. ठीक है जी? Identify the statutory body for the central and state governments on all matters and pertaining to teachers' education which came into existence in 1995. Identify the statutory body for central and state governments on all matters pertaining to teachers' education which came into existence in 1995. कोटा हबो CBSE, NAS, AICTE NCT which one is the correct answer समस्त AICT रो फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन रे कहियो टिके आंसर हबो छ NCT ओके who was the chairman of the committee on emotional integration organized by the Central Education Ministry of India in 1967 Dr Shivanand Dr Sampumanand Dr. Sachidanand and Dr. Atyanand. Which one is the correct answer? Option B, Dr. Sampurnanand. Okay. बहुत ही इंटरेस्टिंग देखो निश्चित मात्रा रे डे बाय डे क्वेश्चन हमरो बहुत ही भलो लेवल रे बढ़ुची ठीक अछि which among the following is not a mandate of University Grant Commission in India advising the central and the state government on the measuring necessary for the improvement of university education serving as the vital link between the union and state government for the primary and secondary board of education monitoring developments in the field of collegiate and university education determine and maintaining standards of teaching examination and research universities कोनटा छुआ यारो ठीक उत्तर हेबो which one is the correct answer
which of the following is not a mandate university grant commission in India? माने एथमध्यरु कोउटा university grant commission रे included नुहो. Option B is the right answer, serving as a vital link between the union and state government for the primary and secondary board of education. According to the educational structure envisaged by the national system of education, the right pattern to 532 system of education is primary, upper primary, high school, upper primary, primary, high school, primary and upper primary, primary, high school and upper primary. Which one is the correct answer? Option A is the right answer to primary, upper primary and high school. According to the national policy of education, +2 states should be accepted as part of which level of education? Graduate, high school, primary school and undergraduate. Which one is the correct answer? According to the national policy of education, +2 states should be accepted as the part of which of the following level of education? Graduate, high school, primary school and undergraduate. Answer chua graduate. Okay. For which of the following disciplines is Nobel Prize awarded? Literature, peace, economy, physics, chemistry and philosophy and or medicine. कोउटा हबो छुआ? Option D is the right answer. All above the subject रे छुआ कोन करे ना ये दिया जाए literature, peace, economy, physics, chemistry and physiology and medicine. Sorry, physiology and medicine. ठीक है. Hitler party which came into power in 1933 is known as Ku Klux Klan, Democratic Party, Labour Party, Nazi Party. एटा तो समझते जानी थी मुआ एटा कोई भी नाजी पार्टी होबो इज द राइट आंसर. देखो 1931 रु एति पर्यंत बंचितला हिटलर स्टोरी हैला निज भितर गोटे माने बहुत बड़ स्टोरी. ठीक अछि. से हुए तो लोक मान को पई खराब निज लोक मान को पई किंतु जर्मनी लोक मान को पई से भलो थिला. तो तार केबे परे जेतले पढेबा तापरे डिटेल्स आलोचना करिबा. FFC stands for Federation of Football Council, Film Finance Corporation, Foreign Finance Corporation. Which one is the correct answer? Film Finance Corporation FFC stands for. Okay, FFC Film Finance Corporation एटा पूरा जनरल अवेयरनेस वितर क्वेश्चन जाउची. पूरा बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अछि आसी पर एग्जाम रे. India State Funding Body of for Films 1927 India Cinematography Committee recommended as such as the state sponsored agency in its report of the Indian Cinematography Committee. Fastest shorthand writer was Dr. G.D. Best, J.M. Tagore, Khudada Khan and J.R.D. Tata. Which one is the correct answer? कोटा ठीक आंसर छुआ यार हबो. कोटा छुआ यार ठीक उत्तर हबो. GD Best. Okay. Ipswich by England is the place of associated with shooting, horse racing, polo, snooker. Which one is the correct answer? Horse racing, Ipswich. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अच्छी. देखो पूरा जनरल अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन. Rowlatt Act was passed in which of the following years? 1919. सादा क्वेश्चन. In the history of the medieval age, the Astha Pradhan was the official council of which of the following king or emperor in India? Chandragupta Maurya, Shahjahan, Shivaji Maharaj and Ashoka. Shivaji Maharaj. Okay. Astha Pradhan. In which year the Muslim League first gave the call for the separate state of Pakistan? Pakistan गोटे सेपरेट स्टेट दिया बोली किए आगे प्रथम कहला 1940 मसिया रे मुस्लिम लीग कहितला. ठीक अछि. लाहौर ठारे 1757 the battle of Plassey took place between the armies of British East India Company and Sirajuddaulah Sujaudullah. कोटा हो राइट आंसर छुआ Sirajuddaulah. Okay.
हु वाज द गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद को गुरु किए थे रामकृष्ण परमहंस। निहाती मात्रा राइट आंसर, निहाती मात्रा रे। ओके, which of the following statement is true about the money bill? money bill विषय रे तुम माने एटा स्क्रीनशॉट नियो ए क्वेश्चन टारे आंसर मते कमेंट सेक्शन रे कुओ, काहे ना ए क्वेश्चन को हमें विभिन्न थरो विभिन्न प्रकार कहि सारछे। स्क्रीनशॉट नियो यार आंसर को नने एबे पढो आंसर कुहो, ठीक अछि कमेंट सेक्शन रे। Okay, consider the following statement regarding a non-confidential motion in India. It can be moved against an individual minister or a group of minister or the entire council of minister. Motion of non-confidential can be अनस्था प्रस्ताव non-confidential जहाँ कहा जाए can be introduced in Lok Sabha only. उठा बच्चा B is the right answer. लोकसभा ओनली नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन कहीं ना सेटा तो परमानेंट ये एटा तो अस्थायी सदन, ठीक अछि। Arrange the emergence of the following pressure group in the Indian politics chronology: All India Trade Union Congress, Hind Mazdoor Sabha, All India Kisan Sabha, Federation of India Chambers of Commerce and Industries. कोटा बच्चा या राइट आंसर ऑप्शन ए 1432। ओके देख लो ऑप्शन ए 1432। Which of the following is and are the discretionary powers of the president? Appointment of prime minister when no political party has a majority in the Lok Sabha, exercise of the pocket veto, power of the promulgating an ordinance. Select the correct answer. कौनटा छुआ यार ठीक उत्तर है वो ऑप्शन ए वन ओनली। ओके, the appointment of the prime minister when no political party has a majority in the Lok Sabha. How many members of Odisha are elected to the 21 जना एटा आंसर तो देखो ये। ओके तो एतिके जिला छुआ आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन निश्चित मात्रा तुम मान को क्वेश्चन भल लागथुओ। प्रथम जो 10टा क्वेश्चन निहाती मात्रा तुम मान को वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो निश्चित मात्रा रे जदि तुम मान को भल लागछि शेयर लाइक सब्सक्राइब फॉलो कमेंट टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड सब्सक्राइब भी मध्य कर दियो एवं बहुत मात्रा रे शेयर करो, ठीक अछि। आउ टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। जय जगन्नाथ।